Desi Dunya Network. Hi, I'm Huma. News and current affairs around Melbourne. Winter has set in Melbourne and the mercury is expected to go down further. Though the ICC World Cup cricket fever is over, the South Asian Public Affairs Council organized a successful 4-day T20 tournament with 9 teams during the Easter holidays. The Dashmesh 11 team won the tournament. The program of the Melbourne Indian Film Festival 2015 will soon be available and Bollywood sizzle Vidya Balan will be in town to announce it. A few programs with Baba Ramdev are also expected to attract big crowd. And now a few upcoming community events. Mind-Blowing Films has released 2 movies, Detective Byomkesh Bakshi and Broken Horses in April. Details about the movies can be accessed through the website www.mindblowingfilms.com. Baba Ramdev will be in Melbourne from April 10th to 12th and the event venue is Moonee Valley Racecourse, Moonee Ponds. Please call 1800-910071 for details. On 12th April from 12 pm till 6 pm, Swami Ramdev's lecture on yoga, Ayurveda and meditation from 3 pm to 6 pm at the Sri Durga Temple, Rock Bank. Info at www.sridurgatemple.com. Natraj Productions are presenting a stage drama, Samantar, with Rohini Hatangadi on Thursday, 29 April at 7 pm at the Robot Blackwood Hall, Building 2, Monash University, Clayton. The play is directed by Dr. Sanjay Patole. DDN broadcasts every Sunday at 2 pm to 2:30 pm. If you have any queries and suggestions, please email them to desidunyanetwork@gmail.com. Thanks for watching Desi Dunya Network. I'm Huma. See you soon. Today we are celebrating Basava Jayanti, which marks Basaveshwara's Buddha Juice, his birthday. If practice makes perfect, then we can vouch today's program is going to be a great success. In few words, Basavana was also known as Basaveshwara, born in around 134. He was an Indian philosopher, a statesman, and a social reformer. He originated from Karnataka. When I say that he was a social reformer from Karnataka, I think I'm not making justice to it. I should be saying that he is a social reformer for the global world. He fought against the practice of caste system, which discriminated against people based on their birth and other rituals in Hinduism. He spread social awareness through his poetry, popularly known as vachanas. Vachanas are nothing but sayings or their thoughts that they have put in a form of given it a bit of a poetic sense to it, but it is more, in simple terms, it is how to lead the life. The reason Basavana and his Sharanas became well renowned and still remain to be looked upon, even in this century, is because they did not advocate or propagate anything in regards to religion. They did not say, let us follow this particular religion or that particular religion. All they spoke about is how one can lead one's life for themselves, for their betterment, and for the community overall. Basavana, along with his Sharanas, removed the misgivings, incorrect thoughts and ways of life that were focused on caste system, discrimination, corruption, bad feeling, hoarding of health, thought of power. Some of the basic things that Basavana has preached is have faith in the creator of this universe. Believe that he is the omnipresent and supreme power. Earn wealth through honest and truthful work. Consume according to your requirements and contribute rest to the society through the form of dasoha. Live morally. Do not aspire for others' wealth, women or God. Never breach anybody's trust. Never lose heart while pursuing the path of trust. Live a principled life.
Work with the feeling that there is none lower than me, there is none greater than the society of Saranas. Since the 12th century, world leaders have taken note of the movement created by Basavana and their Sharanas. His vachanas and philosophies were so strong that rulers have tried to eradicate them by burning the vachanas and the sahityas. They have killed the Sharanas. However, what is good always prevails, and we are lucky that through the efforts of a lot of Sharanas, we were able to save some of the vachanas which we are able to understand and hopefully adopt in our lives. When I say the world leaders, some of the recent examples who have taken Basavana and his Sharanas' philosophies to heart and who have tried to implement in the society are Mahatma Gandhi, where in 1924 he spoke at the Belgium session of the Indian National Congress. He stated, "It has not been possible for me to practice all the precepts of Basaveshwara which he taught 800 years ago and which he also practiced. Eradication of untouchability and dignity of labor were among his core precepts. One does not find even shades of casteism in him. Had he lived during our times, he would have been a saint worthy of worship." This is coming from Mahatma Gandhi, who was one of the world leaders that even today we look upon. Now this I'm talking about a world leader in India. Does it stop there? No. In that era, he wrote vachanas that were eradicated, which were burned. Few were remaining. However, it traveled across the ocean. In 21st January 2013, the Honourable Speaker of the British Parliament, retired Honourable John Bercow, stated in the Westminster Hall, "It's amazing and extraordinary that Basaveshwara professed, campaigned and advocated genuine democracy, human rights, gender equality way back in the 11th century, even before anyone in the United Kingdom had even thought about it." So there are a lot of examples that we can talk about, there are a lot of quotes from world leaders, but in pretext of this function today, I think those two are good enough. न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, whenever there is action, there is reaction. तो बसवन्ना जी जो है वो इक्वलिटी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, क्योंकि इनइक्वलिटी थी. इनइक्वलिटी थी इसलिए उन्होंने इक्वलिटी का आंदोलन चलाया और बसवन्ना जी को सफलता मिली इन द फॉर्म ऑफ लिंगायत रिलीजन. और बसवन्ना ने जो रिवॉल्यूशन किया, जिसके आप लोग बेनिफिशियरी हो, जिनके वचन साहित्य को आप लोग दिलोजान से मानते हो, उनके वचन साहित्य को आप लोग प्रैक्टिस में लाते हो, इसलिए 800 साल भी आप लोग बसवन्ना जी को भूले नहीं. मगर आप अच्छी तरह से जानते हैं बसवन्ना जी ने जो काम किया उसके विरोध में फिर से एंटी रिवॉल्यूशन हुई. जो एंटी रिवॉल्यूशन हुई उसके बारे में हमारे लोगों के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर वर्तमान भारत में आधुनिक युग में बसवन्ना जी का जो रोल है फॉर इक्वलिटी, फॉर ब्रदरहुड, फॉर जस्टिस, फॉर फ्रीडम, और लिंगायत रिलीजन का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटी, जो साइंटिफिक रिलीजन है, उसको फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने आधुनिक युग में अभियान चलाया और उनको वो सफलता मिली. बसवन्ना जी ने रिवॉल्यूशन किया, उन लोगों ने एंटी रिवॉल्यूशन किया. वो लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो वेद, शास्त्र, पुराण इनको मान्यता देने वाले लोग हैं, उनका प्रसार प्रचार करने वाले लोग हैं, यज्ञ, होम, हवन, इन बातों का प्रसार प्रचार करने वाले लोग हैं. वो आज भी मौजूद है, भारत में ही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद है. इसलिए हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप अगर बसवन्ना जी ने जो रिवॉल्यूशन
बच्चों के लिए जो कल्चर आप लोग जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल रिलेवेंट है, मगर बसवन्ना जी का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, जो उनको हासिल करना था, जिसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, उसके लिए हम अप्रासंगिक हैं। आपको मैं सबूत बताता हूं। जिस भारत देश में बसवन्ना जैसे महान भूमिपुत्र पैदा हुए, जिस भारत देश में गौतम बुद्ध जैसे महान भूमिपुत्र पैदा हुए, जिस भारत देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान भूमिपुत्र पैदा हुए, जिनको वर्ल्ड जानता है, ये कोई मामूली पर्सनालिटी नहीं है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सल वर्ल्ड लेवल की पर्सनालिटीज है। आज भी वो देश की, वो समाज की क्या हालत है शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। मैं आप लोगों को कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। भारत देश में 83 करोड़ लोग हैं जिनका इनकम जो है वो 20 रुपीज पर डे, इससे कम है। 26 करोड़ लोगों का इनकम है 9 रुपीज पर डे। 27 करोड़ लोगों का इनकम है 11 रुपीज पर डे, और बाकी के जो 29 करोड़ लोग हैं उनका इनकम है 20 रुपीज पर डे। कि जिन लोगों ने लिंगायत धर्म के विरोध में प्रतिक्रांति की, एंटी रिवोल्यूशन किया, जिन लोगों ने भारत का जो संविधान है उसके विरोध में एंटी रिवोल्यूशन चालू है, बसवन्ना जी का जो वचन साहित्य है वो आपको भारत के संविधान में मिलेगा। वचन साहित्य इज इन प्रैक्टिसिंग वाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो बसवन्ना जी को जो मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बहुत साइंटिफिक रिलीजन है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग मानवता को मानने वाले हैं, मगर आज ना हमारे साथ बसवन्ना जी है फिजिकली, ना हमारे साथ डॉक्टर अंबेडकर है फिजिकली। अब कौन लड़ाई लड़ेगा? कौन लड़ाई लड़ेगा? 6000 जातियां आज भी भारत में मौजूद है। कहते हैं बसवन्ना जी ने कास्टिज्म खत्म किया था, फिर से आया। ये कास्टिज्म हम कैसे खत्म करें इंडिया में? आप लोग ये जो लोग हैं इनका मैं उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोगों को लिंगायत धर्म की प्रसार प्रचार करने की क्यों जरूरत है? आप लोग यहाँ से जब यहाँ पर 10, 15, 20 साल से रह रहे हैं, शायद आपने सुना होगा 2007 या 8 में मेलबर्न शहर पर एक टेरर अटैक होने वाला था। ये न्यूज ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में थी, जो आतंकवादियों ने धमकी दी थी। तो यहाँ पर जो वो रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों ने गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग होम हवन करो, यज्ञ करो। आप लोग अगर यज्ञ करते हो तो शायद ये अटैक रुक जाएगा। और ये जो न्यूज है, ये चर्चा पूरे ऑस्ट्रेलिया में हुई, और जहां पर मेरे कंपनी के कलीग्स है वो मेरे पास आकर हंस रहे थे कि आप इंडियन लोगों का क्या प्रॉब्लम है, दिस इज स्टूपिडिटी। अभी जो क्रिकेट का मैच जो हुआ सिडनी में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ जब खेल रही थी तो इंडिया जीते, इसलिए एक इंडियन ने उसकी जो टंग है वो कट कर दी। ये साउथ इंडिया में एक अंधश्रद्धा है। ये न्यूज 7 न्यूज पर थी। तो ये इनकी जो नालायक संस्कृति है, इस वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं, और हमारी जो संस्कृति है उसका हम लोग प्रसार प्रचार कर रहे हैं क्या? हम बाकी के लोगों के पास जा रहे हैं क्या? लिंगायत रिलीजन को हम प्रोपेगेट कर रहे हैं क्या? तो इस बारे में आप लोग सोचेंगे। मैं लगभग 9 साल से लिंगायत कम्युनिटी में आ रहा हूँ, सभी अच्छे लोग हमारे साथ में हैं, टच में हैं, तो इसके बारे में आप लोग सोचेंगे। इतना ही मैं बसवन्ना जयंती के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। और भविष्य में जो हमारे समाज में जो बहुत घटिया सलूक किया जा रहा है, भारत में 1 करोड़ लोग हैं ऐसे जो विकलांग है, जिनको आंख नहीं है, जिनको हाथ नहीं है, जिनको पाँव नहीं है। ये बातें मीडिया बताता नहीं है। मीडिया तो आप लोगों को, हम लोगों को बताता है कि भारत बहुत डेवलप हो गया, चांद पर तो हम जाके आए और अभी हम मंगल पर भी गए। ये बातें बताता है कि हम लोग बहुत डेवलप हो गए, बहुत डेवलप हो गए। तो साथियों, आज भी भारत के मोर देन 50% लोग जो है वो आज भी इलिटरेट है। 365 डेज होते हैं साल में 365 डेज होते हैं, उसमें 13,000 जगहों पर रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं। ये कौन से लोग हैं? इन लोगों के लिए बसवन्ना जी ने काम किया। ये वही लोग हैं, तुम्हारे हमारे समाज के लोग। इसके लिए आज भी बसवन्ना जी का आंदोलन जो है वो प्रासंगिक है। हम लोगों को
साथ मिलकर काम करना है, इसलिए हम लोग आपके पास आते हैं। हम आपका साथ सहयोग देंगे, आप हमारा अपने लेवल पर साथ सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए आभार और धन्यवाद। My father always used to, for each and every situation, he used to say some vachanas and like make us understand all those things. So I want to take the opportunity and dedicate this song to him now. जयतु जगद्गुरु बसवण्णा परम प्रभुवे नी बसवण्णा पतित पावन बसवण्णा भक्तर प्राणने बसवण्णा भव भय तारक बसवण्णा जय गुरु बसवण्णा जयतु जगद्गुरु बसवण्णा किंकरनीने बसवण्णा शंकरनीने बसवण्णा मंकुमानवर मदवनु हरिसुत महादेवनीने बसवण्णा जय गुरु बसवण्णा जयतु जगद्गुरु